Good evening, all. We'll be starting our session now. Yeah. Uh, yeah. So this today the second and the final session on asset allocation, um, and part two. And here we will be overlooking different assets where you can invest, and there will be a poll session in between. And later on, there will be a Q&A and certain announcements which we'll be making for the further processes. Uh, so I hope everybody, I'm audible to all of you, and we'll start the presentation now. So just a recap to the earlier session. Earlier we talked about what is asset allocation, how does it work, and a single asset of mutual funds. We had gone in deep knowledge about it. So again, a recap. What is asset allocation? It's basically dividing your hard-earned money into different sectors of different assets where it can grow and it can work for you. And you need to set goals accordingly, where your time horizon ke kab paisa chahiye wapas, and how much risk are you going to take. That on that basis, we can so make a plan and we can go on investing. So that this asset allocation would help you in boosting your returns and basically spreading your risk all on that part of it. So today, after mutual funds, what we had done last in the last session, today we are going to take up other four assets. So the next important point on the asset is called debt funds, but in the way of emergency. Now, why a emergency fund or a contingency fund is required and how it is required? So basically, in this scenario, when all things are haywire, still the clarity is not there on how the lockdown will open, and the salaries of and the businesses are been highly affected on this part. So if we put around 6 months of our average monthly income into some FDs and debt funds, and mind it, this has not to be used in के छोटा कोई आउट ऑफ ट्रिप ले लिया या कहीं घर में फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए और उसको यूटिलाइज. दिस इज प्योरली इन फॉर द केस ऑफ इमरजेंसी. So if you're started investing and making a corpus of such kind of combination between an FD and a debt fund, it will always be like a backbone to your investments. It will support your investments, and it will also support in case of there is a say job loss or a temporary lockdown like what happened, what is happening in last 6 months, and so on. So first asset class, what we decide today is the development of this asset called emergency fund. And here what you can do is once you judge that my monthly income is say 50,000. So I basically require 3 lakh rupees of the fund. You can keep half of it in FDs, in a long-term FD, say 4 years, 5 years, where you can get a bigger tenure, a longer tenure, and a higher rate of return. Say so if you want to choose between a 6-year FD which gives you 7.75 and a 5-year FD which gives you 8, so my advice would be go for 5-year FD which gives you 8, and that also in cumulative basis, because this fund is basically we are not going to utilize it. It is just when there is an emergency. That is a backup plan for us. And half of the fund should be into liquid assets like liquid mutual fund. You must have heard liquid funds or ultra short-term funds in that type, where you can just redeem it in 1 or 2 days and also earn when it is idle. So this spread is important, and making this type of fund is the base for your financial planning. Next asset is we will be talking about gold.
So there are a lot of things nowadays, and gold is spurging high. And should we invest in gold, or how do we invest in gold? Is it the need of invest in gold? Does gold get returns? So what are advantages of gold? Basically, it's a traditional way. It's a tried, tested method of hedging against the inflations. Okay, gold will always be growing. In a short term, it will be rise, or there'll be a fall in the price of gold, but it will be always parallel to the inflation. जितना महंगाई बाहर है कि 6 से 8% हर एक चीज महंगा हो रहा है, उतना गोल्ड उसके लेवल के हिसाब से वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है इन अ लॉन्गर पीरियड. So it's hedge against inflation. It holds means it holds its value against in the long time. It's a strong global demand कि आज मैं गोल्ड यहाँ बेचूं या दुबई बेचूं या यूएस बेचूं, हर एक मार्केट में गोल्ड की वैल्यू है. शायद कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू वहां पे नहीं है, लेकिन गोल्ड इज अ यूनिवर्सल एक्सचेंज काइंड ऑफ थिंग, एंड इट ऑफर्स लिक्विडिटी. फिजिकल गोल्ड पड़ा है. हम यूजुअली अगर आप सुनेंगे अपने ग्रैंडफादर्स एंड एल्डरली, तो हमेशा बोलेंगे गोल्ड तो ऐसा रात को निकले गोल्ड दे दिया एंड यू गेट द कैश. So that value gold has. So gold has to be a second level of less riskier asset which is there, and it should be your sum of the amount should be diverted to gold investment. What are disadvantages? Like in this, yes, gold doesn't pay any dividend, so it's a 1 किलो गोल्ड है तो पड़ा है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है, इसमें से कुछ और अर्निंग्स नहीं आ रही है. There are panic shots like 2008 में जब भी Lehman Brothers हुआ, the markets crashed down and gold prices increased, purged in a very short time, then it leveled accordingly. डिमोनेटाइजेशन सब लोग को याद है. तो जब भी ये डिमोनेटाइजेशन हुआ, काफी सारा डिमांड निकला था गोल्ड परचेस करने का. एंड आई रिमेम्बर गोल्ड इन markets was somewhere stress call में 40,000 45,000 पे people have sold their gold, and many people have bought their gold. आज वो उसके बाद गोल्ड वापस प्राइसेस नीचे क्रैश हुए और आज यही लेवल पे वापस आ रहा है. सो बेसिकली पैनिक शॉट्स में गोल्ड काफी वोलेटाइल हो जाता है, एंड इट्स फिजिकल है तो डिफिकल्ट टू स्टोर है. 1 किलो, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 किलो 2 किलो ऐसा फिजिकल गोल्ड है आपके पास, बट उसका भी वे आउट सभी है where gold ETF funds are available. You can have gold bonds, and this now the government of India has been issuing gold sovereign gold bonds. Is a very good option of keeping gold in non-physical form. Plus, you will be earning around 2.5% interest. That too on annual basis. So that's a good option to keep gold as a hedge towards inflation, as a safety. Plus, you have a different asset class where you're investing in. So basically, these two, your contingency fund, your gold will be like a back again a building for your investments, the basis of your building of your investments. Next, we can talk about is EPF and PPF. So basically, EPF is Employees Provident Fund, PPF is Public Provident Fund. Earlier, a lot of people actually didn't knew in unorganized sectors कि businessmen हैं या छोटे shops के employees हैं कि PPF क्या होता है या EPF क्या होता है. Nowadays, let many people know, and let us throw more clarity on it. Basically, होता the process क्या है कि आपकी फॉर एग्जांपल इफ समबडी इन सैलरी एंड उसके सैलरी से पीपीएफ कटता है, तो वो जाता है पब्लिक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, funded by also the government and equally funded by your employer. And this has been actually set up by the government to give a long term investment perspective, and वो पैसा के आपके रिटायरमेंट के लिए काम. सेम वे पीपीएफ में भी ऐसा ही सेटअप है, सिर्फ फर्क ये है कि पीपीएफ का लॉक इन सिर्फ 15 साल है, एंड देन यू कैन रिन्यू इट एवरी 5 years. अर्लियर ऑल्सो एचयूएफ भी पीपीएफ कर सकता था. एचयूएफ इज रुपेश शाह, एचयूएफ एज एन इंडिविजुअल पैन होल्डर, एंड वो भी पीपीएफ कर सकता था. अभी एचयूएफ पे पीपीएफ बंद हो गया है. बट इवन ऑन दैट बेसिस इंडिविजुअली अगर आप पीपीएफ करेंगे में इन्वेस्ट करेंगे, इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, अगेन गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट. सो व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन दीज टू? दिस टू कैन बी लुक्ड एट अ investment option for your retirement. These two are both are government backed,
एंड दोनों में टैक्स एग्जाम्पशंस है, यानी अभी के रूल्स को, अब जो नए रूल्स फाइनेंस मिनिस्टर ने दिए हैं एंड आगे जो लग रहा है कि जो सब्सिडीज और जो टैक्स डिडक्शंस मिलने वाले रहेंगे वो सब कम हो जाएंगे. बट कमिंग बैक टू द ओल्डर रूल्स, it was like that the contribution what you give is also reduces your income to that extent, यानी 80C का deduction मिलता था. And whenever there is a maturity that you take is also tax free. Imagine that huge amount which is थोड़ा थोड़ा आपने जमा किया और 15 साल में, we'll look into that. 15 साल में जो अमाउंट आ रहा है वो पूरा पूरा टैक्स फ्री है, उस पर 1 रुपया टैक्स नहीं लग रहा. So it's a very good option by the government. I've seen a lot of people not exercising this option to the fullest. We'll also look into it. How do you can utilize it? How do you can invest it? Basically, the main ये मोटा मोटा PPF और EPF का है. The difference is EPF is just little higher rate of interest than PPF, and it is more of a employer-employee contribution and directly deducted from their salaries. So how does EPF इफेक्ट करता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि समझो किसी का सैलरी है 15,000 एंड उसका उसमें से 12% उसने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स ईपीएफ फंड. सो 12% वो कंट्रीब्यूट कर रहा है. एम्प्लॉयर जो है उसका वो 3.67 कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये यहाँ पे. And this guy is 25-year-old and he keeps his employment on employment till he is reaching 58. And नए rules में तो इतना easy है कि you have got a unique number from the EPF department, and when you shift the company and if the new company also is enrolled with EPF, your funds will be transferred and again you can continue your EPF. Earlier it was some withdrawal and then you can switch over and all that sort of thing. But this is now online and very easy to do the process. So if we say कि ये बंदा 25 साल का है and he continued for till his age of 58, so almost 33 years उसने investment किया and average PPF 8.6, अभी का current rate है 8.6, पहले उससे ज़्यादा था 9. I have seen 9.50 also being the EPF rates. तो जस्ट इमेजिन वो छोटा सा ये जो 15,000 का 12% और एम्प्लॉयर का 3% मिलके एवरी मंथ 2,000 रुपए का कुछ इन्वेस्टमेंट होता है. एवरी मंथ 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है. इट लीड्स टू 51 लाख रुपीज एट द एंड. So just see by a simple effort, आपको effort तो ज़्यादा नहीं, just by contributing a very small amount. लेकिन दो चीज इसमें बहुत important, the interest rate is favorable and it is a long term investment for 33 years. यहाँ पे आपने थोड़ा भी पैसा बढ़ाया तो just imagine कि वो compounding effect में कितना पैसा बढ़ेगा. अभी तो you can also do a voluntary maximum investment कि अगर आपका पगार 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया है so you can almost put 10,000 a month in this fund from your side. Your employer will also contribute. एंड इसमें तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है. तो अभी जो कोरोना वायरस का जब भी लॉकडाउन था, गवर्नमेंट हैड टेकन अ वेरी गुड स्टेप सेंडिंग दिस their contributions towards the thing. Sorry guys, I just think my video isn't paused. I'm just trying to reconnect. Okay, so am I visible to everybody? Can anyone just raise their hand and am I audible and visible? Because there were some messages to me that the video is not clear. The PPT and the video. Okay. Okay, so we shall continue. Now coming back to the point that the contribution from the government was also good for these 3 months towards this fund. So even this is a thing where government is also looking closely how to benefit to the employers. So ये आपके लिए अच्छा है. अभी ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता एंड पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते तो क्या इफेक्ट होता था?
Say for example, somebody has invested every year 1,50,000. The contribution is 1,50,000 maximum you can invest. आप उसको monthly कर सकते हैं, आप उसको yearly once कर सकते हैं, या जब भी आपके पास पैसा आपने top up करें, कभी 10,000 डाला, कभी भी. But just imagine somebody is putting 1,50,000 every year for 15 years and at the rate of 7.1%. अभी current rate 7.1 है, इसमें 8.50 भी पहले था. So आपका contribution हो रहा है around 22 lakhs, 22 लाख रुपया contribute हो रहा है 15 years, it becomes 40 lakh rupees. Now this 40 lakh rupees is tax free, and that's the biggest part. इस पे 10% भी tax लगा तो 4 लाख रुपया हो गया. So this type of funds are good for long term. They are stable, they are government backed, they have got tax exemptions, and these funds can be really utilized for your retirement. हाँ, एक पॉइंट इसमें पीपीएफ में क्लियर कर रहा हूँ कि, और ये पॉइंट नोट करिए कि इफ द क्लॉजेस से दैट हर महीने की 5 तारीख के पहले आपने इन्वेस्ट करा तो आपको वो महीने का इंटरेस्ट लगता है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव पुट इट इन मिड ऑफ द ईयर ऑन द फर्स्ट डेट 1,50,000, आई विल गेट 6 months इंटरेस्ट. इफ आई पुट इन मार्च, लोग क्या करते हैं कि टैक्स बेनिफिट के लिए मार्च में डालते हैं, तो एंड ऑफ द मार्च, तो पूरा साल वो पैसा उनकी बैंक अकाउंट में रहा जहां उनको 2 या 3% मिले, और एंड में कुछ भी जुगाड़ करके वो डाल दिया तो उसको टैक्स बेनिफिट मिला, लेकिन वो पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं मिला. सो आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास प्रोविजंस हैं, अगर आपकी सब पैसे का अरेंजमेंट हो रहा है, तो बाय 5th of April, इनफैक्ट बिफोर 5th of April, आप पीपीएफ में 1,50,000 जमा करिए. दैट इज मोस्ट एफिशिएंट एंड बेटर वे टू कीप द फ्लो. तो इतना बड़ा पैसा आप कॉर्पस जमा कर सकते हैं. सो अब तक हम लोग ने 3 एवेन्यूज देखे: कंटेंजेंसी फंड, गोल्ड, and PPF and EPF. These three are most of a secured kind of assets which we invest in, and these three are long-term usable investments. Now, the most volatile, one of the most volatile asset is stocks, equities. तो ये एक hot topic रहता है हमेशा हमारे discussions में कि इक्विटीज में इन्वेस्ट कैसे करें, स्टॉक्स, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करें. तो लेट अस टेक अ पोल ऑन दिस. पे इसको एक गेम की तरह हम लेट अस सी हाउ व्हाट आर द रिएक्शंस, एंड इससे आपको एक लर्निंग आ जाएगी कि कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या क्या पॉइंट्स ध्यान रखना है. सो आई लॉन्च अ पोल. एक एक क्वेश्चंस हम लोग देंगे, कुछ करीबन 10-12 क्वेश्चंस हैं. And what I want from you is, this is a company which we are talking about, and it's a IT company, and वो share market में listed है. So I'll give you a news about this company. You have to suggest that, or you to poll that we should buy this company, not buy this company, or you would the options would be, or you would have to have more information about it. So let us start the first question. Okay, the first question is, the founder of this company had won Ernest and Young Investors Award, and also 2-3 more awards. So if this is the news and you know this company is listed, would you buy it, or would you sell this kind of, if you had the sell, and would you sell it, or would you require more information? Please have a poll. I'll pause for a half a second, half a minute. ओके, अब तक फॉर 50% वोटिंग हो गया है, एंड पोल्स में 55 उस 50% में 55 वुड से के 62% लोगों को अभी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, 31% वुड बाय इट. वेरी गुड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू इट.
I should close the poll. I request everybody to be participant in this because ये fast होगा काफी questions and then we have to also move forward with the further things. Okay, so next question which is displayed is that the IPO of this company, ये पहले था, फिर IPO of this company is oversubscribed by 17 times. तो 100 रुपए का चीज है, उसको 17 times वो oversubscribe हुआ है, वो demand है market पे. Would you go for it? Would you sell your shares or would you require more information? Again, a half minute time for the polls. Okay, so till now, around those who have voted, is 54% would buy the shares, 36 will require more information, and 14% करीबन लोग sell करेंगे. That's good. Okay, so we'll more 5 seconds we'll put in, and then we'll close this. Oh, great. Okay, so all the polls results will come on the screen, and last में हम लोग discuss भी करेंगे इसके बारे में. The third question है कि 9 years later of the IPO, the poll that company also launched on NASDAQ, on the international fund. It also launched its IPO, and the company is already in spread with 30 countries with doing great, nice business. So now, are you going to buy shares, you're selling shares, or you're going to require more information? Okay, so till now 50% vote. Abhi fatafat ho raha hai. So now till now 50% vote has been done, and almost 80% would buy shares right now. Very few percentage would sell them, and 13% still require more information. That's nice. Wait for more 4 seconds. Okay, that's great. That's great. So next news for this company is that after 7 years after the IPO and NASDAQ launch, the company's revenue crosses 1 billion. Now, are you going to buy it, sell it, or will you still require more information? So after 7 years, company's revenue would have crossed 1 billion. So in the meantime, the poll is going. Why these questions are necessary? Because this is like all what you can hear in stock markets. This is a common type of questions. We are particularly कुछ selected news articles लिए हैं. Okay, that's nice. So इसका results I'll display in another 5 seconds. So we are also आपके screen पे poll results नहीं आ रहे, तो just मैं announcing it basically. और last पे पूरा to all the total of what happened, why these questions were, वो सब हम लोग बात करेंगे इस पे. So till now around 47% of the people are saying they will have to they will buy, 20% will sell, and 33% still require more information to come in. Okay.
will give them more information. So seeing to the past performance, and company shares are doing good. Now the company shares are around 542 rupees. Now what are you going to do? You're going to buy it, sell it, or still require more information? Okay. Okay, more 5 seconds. So till now, 54% would buy it, 33 would sell it, yeah, and 33 would still require more. 33% would require more information. Okay. Okay. So next question is here. The company grew strong demand, acquired its position in Fortune 500 customers, and records 43% of the revenue in a year. 43% hike in the revenue in this year. So still going to buy it, you're going to sell it, or you're going to require more information. Okay, that's nice. Around again 70% would go to buy the company, 13% still require more information, 13% would sell the shares of the company. That's great. Okay, more 5 seconds and then we'll launch another poll. I hope I'm giving you interesting new questions. Okay, now this is an different article. That company's founder has already confessed about inflating the cash and the bank balances of the company. What would be the scenario? Would you buy it? Would you sell it? Now what you will do? 69% would sell it. Abhi tak, I think 50% voting has done. 29 would still require more information. That's good. And there's 0% who will buy the stocks. Okay. Okay, more 4 seconds. We'll close this poll. Next question is, there is an announcement that a bigger company, a renowned company, has bought this, and due to this buying of this particular company, the smaller company, it has become the fifth largest IT company in India. What will be your reactions now? Would you buy it? Would you sell it? Or will it still require more information? Wow, that's nice. 67% till now have said they would buy the shares, and 33% was like still waiting for more information. Only 6% would sell it. That's good. Another 5 seconds.
Okay, and now last two questions. The new company formed has bought a communication giant, and now it's become the largest independent telecom service provider, and its presence is in now 50 countries. So even announcing the poll, they got around 70, 80% would buy now, 20% would sell it. Okay, that's good. More 5 seconds and we'll close this. So almost 78% will buy it till now, and 11% will sell them, and again 11% would require still more information. Okay. So I'll ask a little questions related to this in after some few slides. The last poll we are running. So now what has happened is, due to all this, at the peak when the prices were before the mergers, after all this efforts and everything, the current stock outperforms and it is reached to the same levels. Like वो 500-600 का स्टॉक था, अभी वो 500-600 के करीब है. तो ये पूरा ऊपर नीचे होने के बाद आज वो 500-600 के करीब है. So now are you going to buy it? You're going to sell it, or you will still require more information? Oh, that seems interesting. Like 40% would be selling it, 31% would be buying it, 35% would require more information. Okay, so we'll close this poll also. Yeah. So my intention of asking these questions was not pinpointing particularly to a company, but how the news on like channels or on information media can affect your buying and selling. Now, point here was to one point what I wanted to uh, share with you all was that um, news are some items which are already, it's a past thing. So you get a news after that event has happened, and your reactions से पहले market में बहुत सारे reactions already हो चुके हैं. So three things what we'll discuss now will be ये अगर if you can anybody could find which company I'm talking about, please reply on the question sessions. And secondly, wherever those who have written buy, so can you give me one reason for all these events, why to buy it, why to sell it, and what additional information would you require when you're choosing such kind of company? So can you respond now? We'll discuss it after seeing a few slides, but you can start responding to it now. Okay. So I'll go to the next slide. I think that there were some issues with the polls. I'll get back to you on this in some time. My team will be working on it. The results of the polls. Okay. So I will come to this slide later.
and three companies. Yet again, I am not trying to justify here कि आप Wipro लो या which companies we are deciding. These are purely just given for an example कि क्या हो रहा है. Stock market में कोई investment कर रहा है तो what is happening actually to the stock. So Wipro में investment growth हम लोग देते हैं. तो initially this company started with some 100 rupees of face value and this thing, and later on year basis it started giving, as it progressed it started giving bonuses and additional shares and splits, and the face value from 100 rupees went to 2 rupees, and the customers, the shareholders enjoyed their increase in the share and increase in the value. So by Feb 19, the price per share was around 386 rupees, and the shares were somewhere around 19 lakh, 1 crore 92 lakhs number of shares. So the wealth created by that guy who was in 1980 invested was around 741 crores. That's it. But who keeps this till 1980 से लेके 2019 का patience किसके पास है? So what this slide is teaching you is long-term pace. ये कंपनी प्रोफाइल बराबर है, बट इक्विटी में जो लोग बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म पेस, इक्विटी में इनफैक्ट people are saying long term pace. What the results are, it's long term what it pays. नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम्पल, ये दोनों आईटी कंपनीज हैं और दोनों, आई एम जस्ट पुटिंग इट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल कि वो आईटी बूम में क्या हुआ. सो द नेक्स्ट थिंग इज Infosys. So again, it was launched in 1993. Somebody who invested 10,000 100 शेयर ले लिया, फिर धीरे धीरे स्प्लिट्स हुए, स्टॉक्स बढ़े, बोनसेस दिया, करते 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 currently somebody that 100 shares are now being owned automatically. The stocks हो गया, बोनस ले लिया, स्प्लिट ले लिया, अराउंड 1 लाख शेयर्स उसके पास हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स. उसकी आज की वैल्यू इज अराउंड 7 crores, and the dividend earned is 5 crores. Just see what amount of wealth it is created for its shareholders. But सब पिक्चर्स रोजी नहीं है ना. बोलते हैं ना अभी पिक्चर बाकी है. So now we'll give an example. Again, I'm saying we are using this company's name just to give a practical example. There is no bias towards any company. This I'm just cut shorting the history of this company, Reliance Power Limited. यानी ये टाइम पे तो कैसा था ना कि पान टपरी वाले के पास भी रिलायंस पावर का आईपीओ का फॉर्म मिलता था. I've seen that days when you just walk to around Dalal Street or in fact any corporate office के Reliance Power का तो आईपीओ लेना ही चाहिए. It was some around 300 rupees, and आज 1st June का the closer is around 3 rupees. Imagine what wealth it deteriorated, irrespective of मैनेजमेंट क्या है, वो डिस्कशन हम लोग करेंगे कि मैनेजमेंट क्या है वगैरह वगैरह. बट दिस इज द वे your wealth gets created, this is the way your wealth gets deteriorated, and this is what equity is. So volatility is a beauty, long term volatility is the beauty of a stock and any equity stock. So what we back to the polls, we were talking about Satyam, and now it is Tech Mahindra. So this is 2001 when Satyam was at its peak and everybody was talking around the world. It was being talked about. करीबन वो 500 साढ़े 500 600 का शेयर था. It kept on giving dividends, and profits increased. There was a lot of buys. There was a lot of companies which want a lot of corporates also. And हर जगह पे उसका rosy picture आ गया था. And suddenly they found that there was a accounting fraud, then a lot of shell companies were made and a lot of things. The stock drooped by 40 rupees, 40 30 rupees कुछ चला गया था. And then who bought it was Mahindra, and it named as Tech Mahindra. But इसमें आज अभी ये टेक महिंद्रा वो धीरे धीरे 40 रुपीज का बढ़ के आज वो 500-600 रुपए में है. बट इसमें हुआ क्या ना, द स्टॉक, I'm just saying the company had no problem.
the company owners had some issues with the accounts, and we are not going with deep in that, but basically मेरा बोलना का मतलब ये है कि उनका उनका जो बिजनेस था, द कंपनी का जो बिजनेस था, कंपनी के पास जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ थी, कंपनी के पास जो वे ऑफ वर्किंग था, वो इतना अच्छा था कि महिंद्रा कंपनी ने वो देखा और उसको बाय किया. If somebody would have not bought that company, or somebody else would have bought that company, they would have seen the sales, the way the working is. So in this three examples, three or four examples, what I'm trying to say is it's not about the wave, it's about the management. It's about many things which get involved. Now I'll see what things get involved, what you should consider while buying a stock. And this is very basics. इसके आगे बहुत कुछ रहता है. This is just basics. So पहले क्या ratios consider करने रहता है. Price to earning. I'm just going through the ratios. And a few ratios I'll explain you. Price to earning, returns on equity, dividend payout ratios. Then there's the inventory turnover ratio. Then it's total asset turnover, working capital, current asset, debt to equity, returns on assets, and so on and so forth. So what are these basic? These are ratios where ये ratios trigger करता है. P ratios price to earnings, कि क्या price पे मिल रहा है stock और उसका price to earnings का ratio क्या है. But ये compare कैसे करता है? I'm talking in a very layman language here because I think most of the crowd would be finance से touch नहीं है. So we can go more deeper, and in question answers we can go more deeper. So प्राइस टू अर्निंग बेसिकली वो सेक्टर में, अभी आप अगर से एनर्जी सेक्टर में है तो एनर्जी सेक्टर में सब कंपनीज एवरेज एक लेवल पे परफॉर्म करती हैं. वो परफॉर्मेंस और ये कंपनी जो आप ढूंढ रहे हैं एनर्जी सेक्टर में, वो कंपनी कंपेयर टू दैट पियर्स, उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या पियर्स हैं, उससे कितना आउट परफॉर्म कर रही है या वो लेवल से कितना है, तो वो जज करने के लिए इज अ पी रेशियो. डेट टू इक्विटी के उसके पास डेट कितना कितना कर्जा लेके बैठी है, उसके सामने इक्विटी कितना है, और उसके रिटर्न ऑन एसेट्स, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस बिफोर टैक्स, बिफोर अदर इनकम, उसका इनकम बिफोर जो अकाउंट्स करते हैं उसका इनकम एक XYZ अमाउंट होता है, एंड उस पे आपका एसेट्स का रिटर्न क्या आ रहा है, सॉरी द एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, यानी अगर कंपनी चलाने को जितने पैसे लगते हैं उसका रिटर्न्स क्या हो रहा है उसमें. ये इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज अगर उसने कंपनी से पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री में उन्होंने उनका कोर काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर्स एंड सेलिंग द पेपर प्रोडक्ट्स. अभी उसने एक उसका और एक कंपनी था जिसका लैंड बेच दिया बड़े आगे महंगे भाव में, एंड दैट क्रिएटेड एन इनकम इन देयर अकाउंट, ह्यूज इनकम. तो आपको अगर आप उसका इनकम सिर्फ देखोगे कि रेवेन्यूज क्या हुआ, तो बहुत सारा रेवेन्यूज दिखेगा, बहुत बड़ा फिगर दिखेगा, बट एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तो वही रहा. एक वन ऑफ द केस हुआ, उसको पैसा मिल गया, लैंड मिल गया, लैंड बेच के पैसा मिल गया, एंड एवरीथिंग वो साल में अच्छा रोजी दिख रहा था. So this operating expense ratio would judge how the company is actually performing of its business, उसका performance क्या है. And these are ratios. This will आपको एक calculative figures देंगे कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इससे आउट परफॉर्म कर रहा है वगैरह वगैरह. बट सॉरी बट ये जो है, ये ये क्वेश्चंस हमेशा आप अपने आप से पूछिए या अपना रिसर्च इस पे ज्यादा कीजिए कि एक्चुअली बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी कंपनी क्या बिजनेस में है, कि वो उसका कोर बिजनेस क्या है. कभी कभी काफी सारे मल्टीपल बिजनेसेस रहते हैं और कोर बिजनेस समझता ही नहीं है, तो यू नीड टू रियली स्टडी दैट कोर बिजनेस टू सी दैट देयर कंपनीज आर परफॉर्मिंग और नॉट परफॉर्मिंग. ये सिर्फ वो बोलते हैं ना कि टाटा के नाम पे या उनके नाम पे आपने स्टॉक खरीद लिया, लेकिन आपको कोर बिजनेस भी वो कंपनी का मालूम होना चाहिए. Then it's about the management style of the company. Is the management providing good company ethics? Is the management looking at creating wealth for the shareholders? Is the management looking at going in the market to create the hype in the market, create their name in the market?
फिर कंपनीज साइक्लिकल है कि नहीं, यानी अभी एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स बनाती है तो उसका द सेल्स वुड बी ऑलवेज डिटरमिन्ड इन द पोस्ट रेनी सीजन पीरियड, कि जहाँ पे खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स लॉन्च होते हैं, आई एम सॉरी, वो टाइम पे। देन इट्स अ जोग्राफिक, फिर वो कंपनी गवर्नमेंट ड्रिवन पॉलिसीज से कंपनी को क्या इफेक्ट होगा। पावर सेक्टर से फॉर एग्जांपल, के पावर सेक्टर में तो प्राइस इज डिसाइडेड बाय हुम, द प्राइस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सो उसको अपना प्रॉफिट मार्जिन बनाने को, उसका वो एक्सपेंस निकालने को, गवर्नमेंट का हर एक चीज में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगा। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, तो फार्मा है तो दे नीड अप्रूवल्स। हम लोग कभी सुनते हैं ना कि ग्लेनमार्क को एफडीए का अप्रूवल नहीं मिला, यूएस का अप्रूवल नहीं मिला है, वगैरह वगैरह। These all approval based companies have to be more stringent in their management rules. They should be more stringent in the product launch का hype कर देते हैं and then they don't get approvals, वैसे भी हो सकता है। फिर आपको ये भी देखना है कि व्हाट इज द जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ दिस कंपनी, कि इज इट इनटू मल्टी कंपनी मल्टीनेशनल एरियाज, is it pan India basis, pan local basis? Finest example of this would be Balaji Chips. Balaji Chips is tier 2 tier 3 cities में जहाँ लेज नहीं पहुंचता है, जहाँ पेप्सी इतनी बड़ी कंपनी है, उसकी बेस्ट कॉम्पिटिटर is Balaji Chips. They have been maintaining the taste, they have maintained the packing, and they have been advertising in tier 2 tier 3. Their focus is that. So if that company's focus is very clear, you rest assured the management is looking at, and then the investment in such type of companies would make you better, give you better returns in the futures. And product spread होता है, तो product spread यानी कैसे, जैसे and I'm again going giving you examples of companies so that you can connect the points to it. It's again not a biased thing to any company. यूनिलीवर है जैसे कि शैम्पूज के ही खुद के ही 4 ब्रांड है, तो पांचवा कोई कॉम्पिटिटर का ब्रांड नहीं, वो आपस में ही कॉम्पिटिशन करा रहा है। सो देयर इज नो कॉम्पिटिशन एज सच फॉर द कंपनी। So the more brand spread, the more number of products spread, and this type of games, this type of business tactics companies use to be in the market. So that type of thing would give you confidence on to buy this stock or not. Then companies का future plan क्या? Are they futuristic, thinking of 10 years, 20 years down the line? And the best example of this can be given by Jio. Reliance has shifted its focus from oil production or oil and oil product productions or chemical productions to the technology, to the data management or data storage production or data distribution thing. So that's the thing which is next. So ये आपको ऐसा लग रहा है कि जियो आज है, लेकिन मुकेश अंबानी के ड्राइंग बोर्ड पे ये 10 साल से पहले स्टार्ट हो गया रहेगा इसका वर्किंग। So this is the way the people, the management or the owners would see the future as. So ऐसी companies you have to also means ये सब आपको information collect करनी पड़ेंगी। And does the ownership structure or destructive technologies आए, जैसे again Jio है destructive technology है, Uber है destructive technology है, something out of the box and they take the market to the surprise. And all this study के बाद आपको ratios देख लिए और ये सब, what I feel is my gut feeling, यानी आपकी gut feeling है ना कि ये company has to perform. I feel वो short term में शायद वो perform नहीं करे, there may be problems, but if you keep on studying, if you keep knowing, if you see कि ये product वो जो company दे रही है उसका तो demand है ही है, in a long term your gut feeling will come true. This is what my experience is all about. So these are the questions and these are the ratios where आपको stock में invest करना है तो ऐसा है। ये बहुत complicated है, तो आप बोलेंगे यार छोड़ ना, मेरे को तो 1000-10,000 रुपया डालना है, दोस्त ने बोला वो कंपनी में डालना, ऐसा नहीं करना। दैट इज योर हार्ड एंड मनी, वो 1000 रुपया हो, 10,000 हो या 10 लाख या 50 लाख, योर मनी शुड बी इन्वेस्टेड विथ रिसर्च, विथ नोइंग कि आपको पैसा कभी चाहिए, आप कौन सी कंपनी में लगा रहे हो, एंड many things go back and this is just a product. So आपका पैसा जब भी assets, different assets में आप invest करोगे, these are avenues where you can spread your money.
नॉट फोकस ऑन सम मनी। यानी बहुत लोगों को मैंने देखा है कि दे डोंट हैव बिल्ट अ बैकअप प्लान, दे डोंट बिल्ड अ कॉर्पस, बट देन उनका काफी पैसा स्टॉक्स में लगा देते हैं, एफएनओस करते हैं, रोज का ट्रेडिंग करते हैं, आज अच्छा है बेच दिया, कल और नीचे के भाव में मिला खरीद लिया एंड ऑल दैट। बट आई एम it doesn't build a corpus, it doesn't build wealth. What I'm trying to say is ये कभी हुआ विप्रो का wealth build वो बंदा जिसने 1980 में पैसा रखा रहेगा आज, because he believed in the Wipro story, because he kept on doing that research, or maybe lucky enough because he forgot the thing, यानी किसी के तिजोरी में मिल गया तो मिल गया, अरे पेपर पढ़े हैं विप्रो के, अभी शेयर है बेच डालो, same thing. But that point, the gist of the story is you need to be consistent, you need to be long term, you need to spread your assets. I hope I'm pretty clear about it. And uh, okay, so basically क्या, वाई वी स्ट्रेस ऑन के आपको गाइडेंस की जरूरत है, इतने सारे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं और आगे और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स आने वाले हैं और चीजें डिफिकल्ट होने वाली, बिकॉज द कंपनी इज नाउ, कभी शेल्फ लाइफ ऑफ अ कंपनी 100 साल हुई करती थी, नेस्ले 100 साल से ऊपर वाली कंपनी है, इतनी पुरानी कंपनी है, बॉश 80 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन अभी द शेल लाइफ ऑफ अ कंपनी इज जस्ट 5-10 years बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्टर्बेंस, because of demand supply disturbance. So ये सब में और whatever new products are, you would, what happens is this reverse pyramid which you all see on your screen. Normally सब लोग के पास ऐसा रहता है, कुछ बैकअप प्लान है नहीं है, थोड़ा बहुत है, गोल्स डिफाइंड नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी दोस्त ने बोला तो ले ली, हेल्थ इंश्योरेंस तो अभी कोरोना के बाद तो सब लोग ले ही रहे हैं, एंड कुछ एफडीज कर ली हैं, कुछ स्टॉक्स में डाल दिया है, फोकस्ड एसेट एलोकेशन नहीं है। Why it makes with a guidance or a planner's ka difference is they will channelize it properly. Your advisors like us would always give you goal based and proper guidance, आपका एक pyramid मजबूत बनेगा। So see, inverse pyramids will always fall down in cases of crisis, in cases of some uncertainties. But a clear pyramid would always be stable, would help you in your all your situations. यानी अगर आपके financial life stable है, all rest stress can be met with, can be done with. So let's do one thing. What we can do, let's head start our investments. We can diversify. उससे क्या होगा कि basically बोलना ये है कि in just of all these 2 sessions which we had on asset allocation, that you need to diversify your investments. म्यूचुअल फंड्स काफी काफी चीजों में अच्छा फिट और मिंगल हो जाता है कि किसी के लॉन्ग टर्म में लेकिन इक्विटी का एक्सपोजर नहीं करना है, तो वो लेकिन इक्विटी का टेस्ट भी लेना है, तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया। फिर किसी को शॉर्ट टर्म में है तो डेट म्यूचुअल फंड्स है, तो म्यूचुअल फंड मोटा मोटा हर एक गोल के साथ थोड़ा बहुत फिट हो जाता है। फिर एंड इट ऑल्सो गेट्स बेनिफिट्स ऑफ द बोथ वर्ल्ड, वी शुड डाइवर्सिफाई, आपको सिक्योर हो गए जैसे पीपीएफ है, गोल्ड है, ईपीएफ है, सिक्योर हो गए, और वैसे ही आपको इक्विटी में स्टॉक मार्केट्स है या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, आप उसमें आपका रिस्क ले रहे हैं, सो यू आर गेटिंग बेनिफिट्स एंड ऑफ बोथ द मार्केट्स। एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ मंथली स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन। समबडी वुड से कि इतना सारा करने के लिए पैसा बहुत लगता है, आई डिफर दैट थिंग। You can start with small options, small investments, and keep on growing it. The importance in this, what we require from a client or as a customer, what you should, as an investor, what you should see is कि क्या मैं consistent हूँ और क्या मैं regularly पैसा दे रहा हूँ। ये दोनों factors, basic factors अगर आपके पास है, believe me, in a long term you can create a good wealth, and आपने कभी सोचा नहीं रहेगा इतनी आपके पास corpus आप जमा कर सकते हैं। So basic the plan, the idea what I would suggest is we can open an e-wealth account. We have named it an e-wealth account, basically where we can manage, invest your funds, and we can manage, you can have regular views. We give an online application, a mobile app to you also at your end, and we focus on building wealth and different avenues में हम लोग आपके साथ advisory पे आएंगे. We will suggest you how goals have to be adjusted, how things have to be invested in. So in this, what I believe is you have to do it. The investment should be done, and it should be for a long term. So let's do an offer. So there's a good offer for you all here. Is
that today till 12 12 night, if you all can register or just send an SMS on my number that you are interested in having, so we can give you a free second opinion. You are already know, you have shares, or you have some investments. So is it working? Is it working properly? Not working properly? We can give you a second opinion on it, on your present investments, or you can have a free session of 30 minutes of consultation. एंड फर्दर अगर आज कुछ प्रॉब्लम है कि आज कमिटमेंट कुछ हुआ है वगैरह वगैरह, तो वी कैन वी हैव एक्सटेंडेड इट टू 30 जून. तो 30 जून तक मिनिमम फीस है आपके लिए 500 रुपीज, एंड बोथ ऑप्शंस ऑफ एक सेकेंड ओपिनियन या फिर एक कंसल्टेशन. आई एम देयर, वी आर एंड आवर टीम इज देयर टू हेल्प यू आउट. So please do participate, and let's see how things work out. So to this, I go with the question answer session. So any questions, most welcome, and let's have that. Yeah, so Q&A, you can just type your questions in the question, and we are happy to answer you all. Questions come in. One more thing, this giveaway, the giveaway link of booking will be sent to you in the mails, in the IDs which you have given to us, and you can log in through that also, and you can register to that also. So, okay, what is that? A question has been there. What is the difference between SIP and a mutual fund? Okay, nice question. SIP is basically a jargon. एक वो नाम दिया गया है monthly investment को. Mutual fund में वो monthly investment को SIP बोलते हैं. It's the same thing. It's a product of an investment which goes monthly. So it's a good EMI which you can tell. Also, we'll be sending you a feedback forms. I really request you. Last two sessions, most of you have given us a great replies on feedback, so we can improve. We can also add new sessions. We are thinking of adding health insurance, as what to choose, how to choose health insurance, top-up policies क्या है, critical illness क्या है. एक ये सेशन भी हम लोग प्लान कर रहे हैं अबाउट टर्म इंश्योरेंसेस एंड ऑन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एंड सर्टेन थिंग्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स. सो आप जितना हमको द फीडबैक, द मोर फीडबैक्स यू गिव अस, it would help us to give good webinars about it. What about investment in land? What are your views on it? Oh, nice question. Land investment basically plot hai. Okay. See, there are two things. Land investment, you're talking about plot. It's an agriculture plot or a non-agriculture plot. और कोई plot है अभी न्यू नवी मुंबई में ऐसा है कि ये यहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है, उसके आजू बाजू प्लॉट्स हैं जो नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर होंगे, एंड उस पे फिर रेस्टोरेंट आएंगे, होटल्स आएंगे वगैरह वगैरह. So you need to be very sure that that thing is going to happen. लैंड में ना द स्टोरी सेल्स लाइक हॉट केक, बट वो लैंड का कब तक वो रिजल्ट आएगा ना, इट्स बिकॉज अगेन इट्स गवर्नमेंट ड्रिवन कि उसके आजू बाजू क्या होने वाला है. It's but yes, if it is a definite thing, many options of land, direct buy, not through कि वो एक सोसाइटी बना रहे हैं और उसमें आप इन्वेस्ट करो कि हम लोग या तो वो एग्रीकल्चर लगा रहे हैं, 10,000 नीम के पेड़ लगा रहे हैं, वो आप लैंड में इन्वेस्ट करो, उतना 6 नीम का पेड़ आपके नाम पे है वगैरह वगैरह. नॉट लाइक दैट. प्योर आपका लैंड प्लॉटिंग होगा,
और वो लैंड का आपको श्योर न्यूज है कि ये इधर आगे कुछ आने वाला है, बड़ा रोड आने वाला, वॉट एवर दैट न्यूज है, कि यहाँ पे मॉल आने वाले वगैरह वगैरह, so that would always give you a better return, and rentals would be also better, but land is very government driven kind of thing. Okay, next question is, if I invest 12,000 for 2 years in MF or SIP of 500 for 24 months, is it gives me same? I'm sorry, I'm just having running nose. Uh, um, it will give me same returns, that is interest? No, 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 not at all, not at all. Because वही पॉइंट मैं सत्यम में बात कर रहा था कि 500 रुपीज का स्टॉक है, सो वी एज्यूम इट के एक म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए का हुआ है, तभी उसका तभी स्टॉक मार्केट्स आर से एट 10,000 रुपीज। कुछ न्यूज आते हैं, कुछ पॉलिटिकल अनबैलेंस होता है, तो ये स्टॉक मार्केट नीचे हो रही है, तो आपके वापस हर महीने 1,000 रुपए नीचे कम भाव में आप खरीद रहे हो, आपका ओरिजिनल जो 1,000 रुपए है वो लॉस में हो रहा है, लेकिन हर एक टाइम आप पिकअप कर रहे हो एट अ लेसर प्राइस, एंड वापस कुछ अच्छा होता है, इट इज गोइंग इन दिस द अपर डायरेक्शन। सो इन बोथ वेज देयर इज अ फ्लो, एंड हेंस द एवरेज जो बनता है ना, कि पहले 100 रुपए में खरीदा, फिर 50 रुपए में खरीदा, फिर 30 रुपए में खरीदा, फिर 75 में खरीदा, फिर 50 में खरीदा, वो जो एवरेज बनता है वो लॉन्ग टर्म पे विल बी ऑलवेज बेटर देन द नॉर्मल रिटर्न्स, द नॉर्मल मार्केट रिटर्न्स। हाँ, अगर आपका बुल रन है कि एक सीधा डायरेक्शन में जा रहा है एंड यू हैव बॉट एट सर्टेन प्राइस लमसम, योर डेफिनेटली रिटर्न्स विल गो हायर, बट हाउ डू यू टाइम द मार्केट? दैट्स व्हाट फर्स्ट सेशन में था कि डोंट टाइम द मार्केट, बी इन टाइम फॉर द मार्केट, सो द मोर लेंथ, तो एसआईपी हमेशा आपको लेंथ सिखाएगा, and this would be less of risk mitigation kind of thing. I would prefer somebody who's starting his base of investments, और या फिर उसको 5-10 साल हुआ अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना, स्टिल वो एसआईपी मोड पे रहे ज्यादा करके, एंड बीच बीच में यू कैन ऑलवेज, जब भी आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन है, यू कैन ऑलवेज टॉप अप ऑन इट। Next question is, it is good to invest in government IPOs like upcoming LIC. What are your views on it? See, there are two IPOs which I would discuss. Again, we have to put in this disclaimers that these are not biased. There are two IPOs. One is IRTCI, Railway ka, or second is New India Assurance Company. Both are New India is semi-government and IRT is purely government. New India Assurance Company started with an IPO of around 600 rupees. It went down to 135 rupees. IRTCI has been good, and even good, being a good IPO, a very big IPO. Same way, LIC would be a better IPO, but I feel yes, LIC's strength is more. But again, you are in, again, your focus should be not on IPO. What the session in these two things we are trying to tell is कि ठीक है, आपने बोलते हैं ना, हम लोग ले मैन में रहते हैं, जस्ट डोंट टेक इट लिटरली कि मस्ती के लिए वो एलआईसी का शेयर्स ले लिया, वैसा है तो ठीक है, बट अगर आप सीरियस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पहले अगर आपका बेस मजबूत है तो यस, यू कैन गो इन फॉर सम सर्टेन गवर्नमेंट आईपीओस डेफिनेटली। Okay, the next question is, with current interest rate reduced in PPF by government, is it still advisable to invest in it? And will the interest rate reduce any further? Definitely, it will reduce further because of ease of liquidity. See, it's always our economy is more of democratic and capitalist economy kind of thing. So जैसे अगर businesses को liquidity चाहिए अगर, तो PPF के rates वो लोग soften करेंगे, but सामने they will give you more option, but at the same time, see, that is a part of it, but PPF का दूसरा सब benefits भी है. PPF is more stronger, PPF is more non volatile kind of thing, कि अगर वहां पे रेट्स कम हो रहे हैं तो आपके ऑलरेडी एफडी में कम हो चुके हैं, आपकी बैंक अकाउंट में ऑलरेडी कम होंगे, सो पीपीएफ विल बी द लास्ट थिंग जहां पे कम होंगे, जहां टच हुआ रहेगा. सो फॉर अ डेट इन्वेस्टमेंट, फॉर अ सेफर इन्वेस्टमेंट, पीपीएफ इज अ गुड ऑप्शन, आज भी कल भी फ्यूचर में भी, जब तक वो उसमें से टैक्स बेनिफिट नहीं निकलते.
Okay. As you are saying that the rate of interest of EPF, PPF is reducing again and again. If it reduces more, so is it worth the choice of investment of? Yes, I'm saying it again. I already said that only because of three reasons. One is it is government backed and ये आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है. सेकंड के उसमें जो टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको, आपने जो पैसा डाला है और जो पैसा आ रहा है, दोनों पे टैक्स बेनिफिट्स हैं. और तीसरा कि उसका जो द वे इट इज लॉक्ड इन ना, कि 15 साल आप निकाल ही नहीं पाओगे. दैट इज इन टर्न वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज वैसा है कि इट हेल्प्स यू, इट लॉक्स इन योर इन्वेस्टमेंट. 15 साल का कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत बड़ा होता है. और व्हाट इज अ बेटर ऑप्शन, व्हाट यू विल सजेस्ट? See, it depends again, ma'am. This is overall scenario में PPF आपका कितना रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है. तो if we can look at the overall investment, then we can give you a suggestion कि PPF के सिवाय better options क्या है. One of the options generally लोग बोलते हैं equity linked saving schemes है, ELSS funds. Yeah, they are better, but again they are riskier than PPF. Okay, are you provide daily intraday stock targets and subscription and any subscription plans? No, dear. We are not into daily intradays. We are not into the FNOs, yeah, put options and call options. That's not. See, that's the problem, ना कि वो चीज ने कभी wealth create नहीं की है. We are here to assist our customers to create wealth. See, आपका छोटा छोटा अमाउंट से अगर आपके पास 15 साल में 20 साल में 1 करोड़ 5 करोड़ होगा ना, then you can, you know, that is a different satisfaction level than फिर ये अभी 2 लाख रुपया कमा लिया दूसरे दिन 3 लाख रुपया लॉस कर लिया. See, and I would always say, don't go for intraday, don't go for FNOs. It will in a long term it will erode your money. हाँ, अगर आप पूरा दिन सुबह से 8:50 से लेके 3 बजे तक आप स्क्रीन पे बैठ रहे हो, यानी ट्रेडिंग स्क्रीन पे बैठ रहे हो, और फिर 24 आवर्स न्यूज आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो, देन इट वर्क्स, डेफिनेटली देन इट वर्क्स. बट आई थिंक उससे अच्छा ब्रोकर विल अर्न रेदर देन यू अर्निंग इट. Okay. Any questions, please? Last 5 minutes, and then we will end this. I again repeat, please give us a feedback and do avail this giveaways. It is worth doing this session with us. You will see what differences we can play. So one of the question is, what fees are you charging for a financial plan? Yeah, it depends on what asset we are looking at, and what it depends on a lot of factors. So we can you just send us a personal message. We can get back to you on this. Okay, thanks for that thank you note. I think it's perfect guidance because I don't still sit for the whole day. Of course. And you should not. You should focus on your core abilities. Say if you're in IT or whatever your job or what business you're doing, increase that. Rest assured, बाकी सब पैसा ऐसे assets दे दो, कोई guidance ले लो. They let the work be done by them. They are the experts, and you be expert in your core. तो वो दोनों balancing में आपको wealth अच्छा create होगा. Okay. Any other questions, or we will end in next 2 to 3 minutes? It was great talking to you all, guys. Please reply to it, and also like us on Facebook, Insta, and LinkedIn. We are there on the three platforms. So thank you. We will be closing this right now, and we'll get back to you again. Thank you so much.